Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the new video. I am Dr. Nurbad Shah. आज की वीडियो जो है that is the numerical differentiation which will be based on the Newton forward difference interpolation method, and I'll be explaining how do we do that by using calculator and how do we do MATLAB coding for numerical differentiation, which is based on Newton forward difference formula. First phase में I'll be talking about the derivation. How do we derive numerical differentiation formula for by using Newton forward difference formulas. Okay, we will be using x and xp interchangeably. They are okay because anything which is unknown here we replace that, or we can use that as xp or x. It's okay. Whereas obviously x जो है ये बराबर होता है किसके, x नॉट प्लस पी एच, राइट. और सिमिलरली करस्पॉन्डिंग जो एफ पी होगा वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पी एच होता है. अच्छा, अब हमने फाइंड ये करना है कि एफ पी की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करनी है. लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे एफ पी जो है उसमें p मौजूद है, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, वो p है, राइट. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने चेन रूल को यूज़ करना है. डी बाई डी एक्स ऑफ एफ पी दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू डी बाई डी पी ऑफ एफ पी मल्टीप्लाई बाई डी पी बाई डी एक्स. So instead of replacing p here with x and then differentiating respect to x, ये long expression बन जाते हैं. So it's better to apply chain rule. Okay, and then we would find first dp by dx, which is 1 over h. And how did we find that? You know that x is equal to x naught plus ph, और फिर हमने x को respect to p differentiate किया. So x naught derivative 0 हो जाएगा because ये constant है, whereas ph की derivative h बन जाएगी with respect to p. और यहाँ से फिर अगर हमें dp by dx चाहिए तो ये 1 over h हो जाएगा. Okay, and all together now d by dx of fp, that is dfp by dp multiplied by 1 over h. So that's the basic rule for numerical differentiation. अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करेंगे तो इसमें हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं कि आपके पास जो एफ पी होगा, आप जो भी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, चाहे न्यूटन फॉरवर्ड है, चाहे न्यूटन बैकवर्ड है, चाहे स्टर्लिंग एट्सेट्रा है, तो उन सब में हम क्या करेंगे, जो फार्मूला होता है, इंटरपोलेटिंग पॉलिनॉमियल होता है, उसको हम विद रिस्पेक्ट टू पी डिफरेंशिएट करेंगे और साथ में 1 ओवर एच लगाएंगे. इसी को फिर हम एक्सटेंड कर सकते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए भी. तो सेकंड ऑर्डर में यही चीज़ है कि आपने एफ पी को 2 बार डिफरेंशिएट करना. यू हैव टू फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ पी एंड देन डिवाइड इट बाय एच स्क्वायर. For third order derivative with respect to x, you have to differentiate fp with respect to p 3 times and then divided by h cube and so on. Okay, now if we consider Newton's forward interpolation formula, which is obviously given by fp is equal to ये ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है पिछले वीडियो में, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं. इसको हमने डिराइव भी किया था कि ये फार्मूला हमारे पास कैसे आता है. तो फॉर सर्टन वैल्यू ऑफ एक्स, अगर हमारे पास ये y के वैल्यूज़ हों तो वाई पी जो है इट इज़ डिफाइंड एज वाई नॉट प्लस पी एच पी डेल्टा वाई नॉट डेल वाई नॉट प्लस पी पी माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट एंड सो ऑन. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरह मैंने पहले कहा कि वाई पी में जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वो p है, और हमें इस वाई पी की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए. तो हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को या इसी बाइनोमियल को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी और फिर 1 ओवर एच साथ में लगा लेंगे. अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. यू नो दैट पी पी माइनस 1 कैन बी रिटन एज पी स्क्वायर माइनस पी. इस तरह से इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, और अगला टर्म भी आप कर सकते हैं एंड सो ऑन. अब इसको अपने रिस्पेक्ट टू पी डिफरेंशिएट करना है, तो इसकी डेरिवेटिव जो है दैट कैन बी फाउंड इजीली. ये कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, p की डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2p माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल डेल क्यू वाई नॉट. यू कैन हैव अनदर टर्म एज वेल. सो डी
एफ पी बाई डी एक्स अगर हम फाइंड करना चाहें, डी वाई बाई डी एक्स या डी एफ पी बाई डी एक्स अगर हम फाइंड करना चाहें, तो यहाँ पर सिंपली 1/h आ जाएगा, और ये डी वाई बाई डी वाई पी डी वाई बाई डी पी जो है वो इसके बराबर है। तो बाकी वही चीज़ एज इट इज़ आ जाएगा, सिर्फ हम 1/h साथ में लगा लेंगे। तो दैट्स द फार्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड द सेम कैन बी एक्सटेंड फॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स एज वेल, जिसमें हम क्या करेंगे, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे p के साथ, और साथ में यहाँ पे 1/h² बन जाएगा। So the second derivative, as I said, you can find that by simply differentiating this function again, so which will be 1/h² and to del square y naught plus the derivative of this is 6p minus 6 now, and so on. In similar way, you can find third order as well, fourth order as well, and the same can be extended to nth order derivative. And obviously you need to add some more terms here as well. Okay, now let's talk about the example for this specific method. We should say given a polynomial with following data points. For x equal to 1, we are having the value of y is 7.989. For x equal to 1.1 and so on. Now, how would you find derivative at x equal to 1.1? अच्छा, यहाँ पर एक ज़रा बात ध्यान में रख लें कि जब हम इंटरपोलेशन की बात करते हैं, तो इंटरपोलेशन में हमारे पास जो p की वैल्यू होती है, दैट इज़ ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1. वी अज्यूम दैट इट शुड बी बिटवीन 0 एंड 1, और उसके लिए जो सिलेक्शन होती है फिर p की और x नॉट की, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है कि अगर आपके पास अननोन वैल्यू सपोज करें इन दो पॉइंट्स के बीच में है, तो आपने इसको x नॉट लेना होता है। अगर इन दो के बीच में है, तो आपने इसको x नॉट लेना है। तो ये बेसिकली क्या कर देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा आपके p को 0 और 1 के बीच में। अच्छा, अब लेकिन ये ज़हन में रखें कि इस केस में p जो है वो न 0 हो सकता है और न 1 हो सकता है जब हम इंटरपोलेशन करते हैं। रीज़न क्लियर है, क्योंकि अगर हम 0 लेंगे या 1 लेंगे, इसका मतलब यह है कि हम टेबुलेटेड वैल्यू को दोबारा फाइंड कर रहे हैं, जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती और ऑलरेडी नोन है। लेकिन इन पॉइंट्स पे जो टेबुलेटेड वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव्स नोन नहीं होती, राइट। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव को भी फाइंड कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें फिर ये 0 भी शामिल होगा, यानी p कैन बी 0 एज वेल। p इक्वल टू 0 का बेसिकली अब मतलब क्या हो जाएगा कि आप जो डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं वो कहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, टेबुलेटेड वैल्यू पे फाइंड कर रहे हैं। चाहे आप 1.1 की बात कर रहे हैं, चाहे 1.2 पे बात कर रहे हैं, चाहे आप 1.1 पे बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे p क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 हम नहीं लेते इसको, क्योंकि अगर मैं p को 1 लूँगा तो इसका मतलब है अगेन आई एम टेबुलेटेड वैल्यू। लेकिन अगर सपोज़ करें मेरे पास ये आ गया और मैं इसको x नॉट ले रहा हूँ 1.2 को, तो इस केस में मेरे पास p जो होगा 1 होगा, जो कि ऑब्वियसली इलॉजिकल है। अगर मैं 1.3 पे डेरिवेटिव फाइंड करना चाहता हूँ, तो आई विल बी टेकिंग सिंपली 1.3 इज़ माई x नॉट। तो व्हेन आई टेक दिस वन इज़ माई x नॉट, इन दैट केस व्हाट वुड हैपन, मेरे पास जो p होगा वो फिर से 0 हो जाएगा। तो जैसे हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, यहाँ से शुरू होता है p0 1 के बीच में है, हम जैसे 1.3 पे पहुंचते हैं तो हमने क्या करना है, x नॉट को चेंज करना है यहाँ से यहाँ पे। तो इसलिए हमारे पास जो p की वैल्यू है, हम ये चाह रहे हैं कि वो 1 के बराबर ना हो और वो सिर्फ 0 और 1 के बीच में हो, इंक्लूडिंग 0। ओके, तो यहाँ पे भी हम 1.1 पे फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो p होगा दैट विल बी 0। And now we need to construct a difference table first, because it involves all the formulas, and this will be taken as our x naught 1.1, ये f naught होगा, this will be first order difference, this will be second order difference, this will be third order difference, ये fourth order difference होगा, and so on. We can go for fifth order as well, ठीक है, जहाँ तक आप करना चाहते हैं, it's up to you. Okay, and then we know the formula. X is a 1.1, so we'll be taking x naught as well 1.1. Okay, and this is the formula. वही फार्मूला है, ध्यान में रख लें, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उस फार्मूले में हमने p की जगह 0 पुट किया है। वी आर पुटिंग p इक्वल टू 0। तो जो फार्मूला थोड़ी देर पहले मैंने डिराइव किया था, उसमें हमने p को 0 पुट किया, सो वी गेट दिस फार्मूला, यू सी। Okay, and then you put the values, you know, h is 0.1, delta y naught, del y naught is taken from difference table, which was p.378, and this is minus 0.03, and this is 0.004. You can put the value of del 4 as well, del 5 as well,
and when you simplify this, we get 3.952. Now what I'm doing, मैं इसको explain करने जा रहा हूँ इसको, how do we do that by using calculator if you are not if you don't want to compute these things separately. Obviously आपने फार्मूला लिखना होता है, उसके बाद फिर आप ये वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन how do we do that by using calculator directly? So let me do that for you. ओके एंड अगेन आपने सबसे पहले क्या करना है कि कैलकुलेटर का जो मोड है वो आपने चेक करना है कि क्या वो मैथ मोड में है या नहीं. यहाँ पे ऊपर लिखा होगा, अगर नहीं है तो फिर आप क्या करें, पहले इसको आपने 1 को प्रेस करना है, जिससे हमारे पास ये मैथ मोड में आ जाएगा. अच्छा, अब हमने करना क्या है कि हम जाएंगे वापस उस फार्मूले की तरफ जो न्यूटन फॉरवर्ड का है, बिकॉज आई एम गोना यूज़ न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्टली. ओके, मैं उसको यूज़ करूँगा, मैं डेरिवेटिव वाला फार्मूला यूज़ नहीं करने जा रहा हूँ, मैं इस फार्मूले को यूज़ करूँगा. इफ़ यू सी दिस वन, ये डेरिवेटिव वाला पार्ट मैं इसमें यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ से पे डायरेक्ट हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर. सो सबसे पहली बात क्या है कि आपने डी बाई डी एक्स लेना है. अगर आप शिफ्ट प्रेस कर दें, बल्कि इनफैक्ट हमें पहले 1/h चाहिए होता है. इफ़ यू डू दैट, so first we have to take 1/h, and I may take that value directly because हमारे पास जो h है वो 1.1 है. So I'll go to difference table directly from where I could define 1.h as well. You see this is my h, it's 1.1. So हमें 1/h साथ में चाहिए, तो 1/h that basically means 1 divided by, if you divide 1 by 0.1, so that will give you simply 10. So this is 10. So you see that I'll be multiplying the formula by 10. So I'll take 10 multiplied by, अब यहाँ पर ये मैं इंसर्ट करूँगा डेरिवेटिव को, दैट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ, एंड देन आई विल राइट दैट फार्मूला जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था. अब ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास a होगा, आई विल टेक दिस एज b, दिस इज़ माई c, दिस इज़ माई d, दिस इज़ माई e एंड f, जहाँ तक मैं जाना चाहता हूँ. और जो p मेरे पास है, उस p को मैं यहाँ पर x ले लेता हूँ. So the first step is what we take simply a, so I'll be taking that as a, and then we take plus. Next step is what's I will take x, keeping in mind x का मतलब मेरा क्या होगा, p होगा. जहन में कि x का मतलब यहाँ पर 1.1 नहीं होगा, x का मतलब p होगा, जिसको हम 0 लेंगे. And then x multiply by the first order difference, this one you know that, इसको हम क्या कर देंगे, इसको मैं b कह देता हूँ. Okay, that's my b. And then next step in the formula, if you remember, it is x multiplied by x minus 1. So I'll be taking x and then bracket, and then we take x minus 1. I should have taken a capital X. What did I do? Yeah, this is x into x minus 1, and then we take product with c, where c is my second order difference. Okay, and then we have plus. Next step is x multiplied by x minus 1. You know the formula. I left something, oh, I'm going back to write that as well. So it is x minus 1 then we have another term x minus 2, and then closing this bracket. Then we divide this by 3 factorial, which is 6, and then we multiply it by d now. Yeah, I just left dividing by 2 factorial here as well. So I'll be dividing this, you can divide anywhere. So it is divided by 2 factorial, which is divided by 2. Okay. अच्छा जी, अब इसके बाद हमने इधर भी ये वैल्यू पुट करना. अच्छा, अब इसको आप मज़ीद एक और टर्म भी ले सकते हैं, लेकिन तरीका आपको समझ आ गया. इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म लेंगे प्लस,
and then you simple take x minus 1, x minus 2, x minus 3 divided by 4 factorial. Okay, and then we simple डिवाइडिंग बाय ई जो कि नेक्स्ट डिफरेंस होगा, और यहाँ पर हम सिंपल एक्स पुट कर देंगे. एक्स अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्स का मेरा मतलब यहाँ पे होगा आई विल बी टेकिंग ओनली its value will be p. Okay, so let's press this calc. When you press calc, it will ask about a. So a is what, 8.403, and then you simple press equal. Then it will ask about x. So x will be 0 because we are finding at p equal to 1.1, and for p equal to 1. For x equal to 1.1, p will be 0. So I'll take p equal to 0. So simple equal press. Now b is this value, which is 0.378. And then you press equal. Then we go for C, where C is this one, is minus 0.030. We'll simply press that and you get this one. Then we go for D, where D is 0.004, which is the fourth order difference, third order difference, sorry. This one 0.04. अच्छा, अगर आप इसके बाद आगे जाना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये भी देना होगा, वो फिर ई मांगेगा, लेकिन हमारे पास अभी ई की ज़रूरत नहीं है. And then it found the derivatives. So if you simplify this, it will give you 3.94333, which I presume the same. Yeah, there will be a bit difference in the decimal points because we have used less differences as compared to this example. So obviously you see that के हमने वही, हमारे पास वही आंसर आ गया, and that has become a bit in a short time. ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले वीडियो में कि हम डिफरेंस टेबल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर. सो आई होप यू कैन डू दैट एज वेल. तो आपने डिफरेंस टेबल को भी कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग कैलकुलेटर, और फिर आप डायरेक्टली इस फार्मूले को इंसर्ट करके आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है. अच्छा, हाउ कैन यू डू दैट बाय यूजिंग मैटलैब? लेट मी एक्सप्लेन दैट एज वेल. ओके, इसमें हम इनपुट में यूज़ कर रहे हैं एक x को और दूसरा y को. तकरीबन सेम कंसेप्ट है जो हमने किया था इसको इंटरपोलेशन में. सिर्फ फ़र्क अब यहाँ पे है कि हम यहाँ पर एफ पी जो फाइंड करने जा रहे हैं और जो p हम फाइंड करने जा रहे हैं उनको हम सिम्बॉलिक कर रहे हैं. Because I'll do everything in similar way. At the end, I'll be simply differentiating fp with respect to p. Okay, so this part is what, from here onward we are basically constructing a difference table. So that's the construction of difference table. Okay, and you see the first this is dt is basically is what, that's the complete table जिसमें हमने पहले में ज़ीरो ले लिया और हम चाह रहे हैं कि उसके 10 कॉलम्स हों और ये x की वैल्यूज़ हों whatever. और फिर इसके बाद हम क्या करें, इसका जो फर्स्ट कॉलम है हम चाह रहे हैं कि उसमें x की वैल्यूज़ हों, तो वी जस्ट इनपुट द वैल्यूज़ ऑफ x देयर. और जो सेकंड कॉलम उसका आएगा, वो सेकंड कॉलम हमारे पास उसमें y की वैल्यूज़ या f ऑफ x की वैल्यूज़ होंगी. ओके, एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, अब जितने भी हैं, टेंथ में फिर अगर इतनी वैल्यूज़ नहीं हैं तो आपके पास ये बाकी कॉलम ज़ीरो आ जाएंगे एज इट इज़. और यहाँ पे सिंपल हम ले रहे हैं कि दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ का डिफरेंस ले लें. Then we compute h as well. H is x2 minus x1, and then we pick we basically go for the value of p. हमारे पास p क्या होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट करेगा by giving the value of x here. ओके, ये ऑलरेडी हम उसमें भी कर चुके हैं जब मैंने पिछले वीडियो में किया था. सो यहाँ पर r को i ले लेगा, एंड देन वी यूज़ द फार्मूला, and for which we take the value of f, that is f naught. This is first order difference, this is second order difference, this is third order and fourth order. And then by putting the Newton forward formula, ज़हन में रखिए यहाँ पर हमारे पास जो p आ रहा है वो अब सिम्बॉलिक होगा. ओके, जब इसको हम कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास ये सिम्बॉलिक ही होगा. And that's a simple formula. You see, f naught plus p del f naught plus p into p minus 1 del square f naught by 2 factorial
p minus 1 p minus 2 multiplied by del cube and then del 4. Okay, now if you run this for this purpose, we would need the value of x, where x can be taken as the value from 1 to 0 0.6 with increment of 1.6 with increment of 0.1. So I may take this value like 0.1. So we are having this value 1, 1.1, 1.2. It was obviously there. If you go was 1, 1.1, 1.2 up to 1.6. And then we defined y as well, which are the values given here. These are the values of y. So we can simply take the values of y, which are like that. Now we have x and we have y, and then we will be finding what? Simply copy this part from here. From here, you see, simply copy this one from here, and you put it here. Just paste here. अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है, हमें चाहिए XP जो होगा इट विल बी 1.1. बाकी ये जो जिसको हमने fx का है ये असल में y हो गया आएगा यहाँ पे, और x वाले हम इसको x ही का हुआ है. When you run this, it will simply give you a polynomial of degree 4, जो कि वेरिएबल फॉर्म में ही आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म में हो गई. h.1 आ गया ऑलरेडी फाउंड, p सिंबॉलिक है, और fp भी अगर आप देखें तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में है, राइट. अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने अब इसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी है और इसके साथ हमने p को पुट करना है 0 के बराबर. तो इसके लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं 1 by h, because we know it's dividing by h, and then we multiply that. This is the command used for substituting the value sub, and then we have diff command जो है वो MATLAB में डेरिवेटिव के लिए यूज़ होता है. और इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जो fp हमारे पास है उसको हमने डिफरेंशिएट करना है, और फिर हम इसमें लेंगे p की वैल्यू 0. I hope I have done correctly. And then we put this value. इसी थोड़ा सा बड़ा वैल्यू आ रहा है, लेकिन आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. MATLAB जो है उसको हैंडल करता है EVAL के साथ. एंड यू सी आंसर मैंने इसको इसलिए कहा क्योंकि मेरे पास ये जो फाइनल वैल्यू आ गई है, इसको मैंने कोई नेम नहीं दिया था, इसको ये आंसर में स्टोर हो गया, इसलिए इसको मैंने दोबारा आंसर पे इसको कर दिया है. तो अगर इसको मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू है, या दैट इज़ ऑब्वियसली द सेम थिंग. It's sorry, it's already there, which is 3.4958. This is the value. So if you check this value there, it was almost the same, because we have used up to 4 differences. If you go for further differences, so you'll get this answer. So it is 3.9458. And I hope you understood it. Thank you very much. See you in next video.